All right, all right, all right, all right. I think I am live. Yo guys, welcome to today's stream. ओके आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट. कैन यू सी मी? येस यू कैन डेफिनेटली सी मी. मेरा ऑडियो वीडियो तो प्रॉपर चल रहा है. So hello everybody, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up? Dev Shah this side and I welcome you all to Financial Management Revision Batch lecture number 6. And which topic are we going to revise today? बॉस आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस. वन ऑफ इट्स काइंड टॉपिक आई विल टेल यू. क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए? येस, दिस चैप्टर इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. अब द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर, देर आर मोर देन 40-45 रेशियोज. याद नहीं होते. We face difficulties in memorizing the ratios. We face difficulties in solving the questions. Not to worry, you came to the right man. बिल्कुल सही आदमी के पास आए हो बॉस. It's my goal today that I will take the fear of your ratio analysis out today itself. आज के आज ही भाई साहब रेशियो एनालिसिस का दर्द जो है तुम्हारे जीवन का, I'll take that out. Okay, you just have to stay tuned, stay connected with me. बहुत ही बढ़िया. शुरुआत करने से पहले लाइक किया सेशन को? जाओ लाइक करो. गो लाइक द सेशन, सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज अ लॉट ऑफ सच कंटेंट इज कमिंग इन द फ्यूचर. अच्छा, एक और चीज बिफोर आई जस्ट स्टार्ट. इन द लास्ट लेक्चर आई मेड अ मिस्टेक. आई सेड दैट द नेक्स्ट लेक्चर इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बट आई फॉरगॉट दैट एज पर द शेड्यूल टुडे वी आर सपोज टू रिवाइज रेशियो एनालिसिस. तो भाई साहब वो एक मिस्टेक था लास्ट लेक्चर में. सॉरी फॉर दैट, डू फॉरगिव मी, बिकॉज आज जो है रेशियो एनालिसिस रिवाइज होने वाले हैं. नाउ आई हैव कंसाइज्ड दिस चैप्टर to the most 20 to 22 most common ratios which are targeted in your exams. तो सर ये 20 से 22 रेशियोज हम कर लेंगे तो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे. ट्रस्ट मी, 20 to 22 ratios, if you revise with me logically, all the exam questions you are going to solve it like this only. So are you ready? Let us quickly begin with our ratio analysis in 3 2 1. Let's focus. So ratio analysis, we are going to solve 5 types of ratios. First is the liquidity ratios, coverage ratios, long term solvency ratios, turnover ratios, profitability ratios. सबके बारे में बताऊंगा, not to worry. इसी के अलावा we have some additional concepts which are required for you to revise, to understand if you want to solve the questions effectively. One is the concept of works cost, one is the concept of operating profit. इसके अलावा there is another concept, that is concept of closing finished goods and closing raw materials. I'll come to that, don't worry. अब एक सिंपल सी बात मैं बोलूँ तो रेशियो क्या होता है? बच्चों वाली चीज़ है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एवरीबडी नोज दैट. ठीक है, नाउ लेट अस बिगिन विद आवर एक्चुअल रेशियोज. ओके, सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू चेक द लिक्विडिटी रेशियोज. अब ये जो लिक्विडिटी रेशियोज है ना, वो चेक करते हैं वेदर द कंपनी इज इन अ लिक्विड पोजिशन और नॉट. लिक्विड बोले तो पैसा, कैश, लिक्विड एसेट्स जिनको आप क्विकली बेच के पैसा अंदर कर सकते हो, दोज आर कॉल्ड एज लिक्विड और लिक्विडिटी रेशियोज. सो कंपनी में वो लिक्विड एसेट्स का क्या सीन है? what are the amount of liquid assets, how much liquidity a company has, because apart from profitability, liquidity is also a very very important factor. So that is why we check ratio analysis on liquidity basis. News में बताऊंगा, not to worry. Okay, so the first ratio is current ratio. very very pretty simple. current assets divided by current liabilities, ये तो अपने आप ही याद हो जाता है. Okay, next comes quick ratio और acid test ratio. It is quick assets upon current liabilities. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. What are quick assets over here? See, क्या होता है ना, that many a times in your business there are certain current assets जो easily market में बिकते नहीं है, which are not easily sold in the market. Number one is closing inventory. Why closing inventory? Because तुम खुद सोचो, the inventory which is lying in our business till date, कल उठ के अगर धंधा मंदा हो गया, मतलब let's say for example tomorrow there is a period of recession, then this inventory will not be sold so easily. ये inventory तो अटक गई ना मेरी, कल उठ के धंधा मंदा हो गया तो recession आ जाएगा, तो भाई साहब inventory तो इतनी easily बिकेगी नहीं मेरी. So
closing inventory is not my quick asset. I cannot quickly sell it. Closing inventory in terms of recession is stuck. इसी के अलावा एक और चीज अफेक्ट होती है, that is prepaid expenses. Once again, this is a current asset. Now just let's say for example, when business conditions were normal, मैंने expense pay कर दिया so that I can get the benefit in future. But कट टू द नेक्स्ट डे रिसेशन आ गया भाई, अब मैंने एक्सपेंस तो पे कर दिया, बट क्योंकि रिसेशन है सामने वाला मुझे उसका बेनिफिट ही नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसका खुद का धंधा ठप है. The person who was supposed to give me benefit for the expense, his own business is going downfall because of recession. So can I say that prepaid expense का भी मुझे कोई benefit मिलेगा नहीं. So what are quick assets? Take your current assets, reduce closing inventory and prepaid expenses. Logically this has been sorted. अच्छा, another thing, when you are solving questions ना, make sure that you do not assume that prepaid expenses are present. देखो, generally quick assets in question is what? It is करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. अगर इंस्टीट्यूट को प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करवाना होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस का फिगर ICAI विल गिव यू सेपरेटली. इफ ICAI डज नॉट गिव यू द प्रीपेड एक्सपेंस फिगर सेपरेटली, डोंट टेक इट, जस्ट अज्यूम दिस मच बिकॉज इट इज अ लॉजिकल असम्पशन ना दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज देयर इन एवरी पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, बस. So this is the amount of quick assets. So 2 ratios already done logically. Next is net working capital. पूरा चैप्टर है इस पे, बट एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर दैट नेट वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय माय करंट लाइबिलिटीज. कूल. सो ये 3 रेशियोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू लिक्विडिटी. नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज. क्या लंबे समय में आपका धंधा ठप होगा या नहीं होगा? इन सिंपल वर्ड्स, इन लॉन्ग टर्म सेंस, लाइक इन द नेक्स्ट कमिंग 2 years, 5 years, 10 years, विल योर बिजनेस स्टे इन द मार्केट और विल योर बिजनेस रैप ऑफ लाइक एनीथिंग? ठीक है, तो ये रेशियोज आपको वो चीज बताएंगे कि धंधा आपका आगे चल के टिकने वाला है या आप उड़ जाने वाले हो मार्केट से. द वेरी फर्स्ट रेशियो इन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज डेट इक्विटी रेशियो. डेट इक्विटी रेशियो वेरी वेरी सिंपल एज दैट, डेट और इक्विटी. तो डेट इक्विटी रेशियो का रेशियो इज वेरी वेरी सिंपल, बट दिस नोट, इफ यू डू नॉट पे अटेंशन टू दिस नोट, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द एग्जाम क्वेश्चन. वेरी वेरी सिंपल. सो देखो, वेरी वेरी सिंपल. क्वेश्चन विल गिव यू स्पेसिफिक वर्डिंग्स, मतलब डेट में क्या लेना है सवाल आपको बोलेगा. इक्विटी में क्या लेगा क्वेश्चन विल टेल यू. बट व्हाट इफ क्वेश्चन मेंशंस नथिंग? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट एंड ओनली द वर्ड्स डेट इक्विटी रेशियो आर मेंशन्ड, डेट में आएगा ओनली लॉन्ग टर्म डेट. लॉन्ग टर्म डेट मतलब वॉट एवर बॉन्ड्स यू हैव इश्यूड, वॉट एवर लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स यू हैव इश्यूड, ओनली दैट विल फॉल a part of long term debt if question is silent. And equity means equity shareholders fund, मतलब कि you will take only equity share capital and reserves and surplus. So let us read this note. Question will give you specific wordings. If not, in debt equity ratio, debt will include only long term debt, and when it comes to equity, it will be shareholders equity या फिर equity shareholders fund, मतलब equity share capital and reserves and surplus. Question कभी कभी shareholders equity word भी use करेगा. You have to remember that shareholders equity is nothing but equity share capital plus reserves and surplus. बस इतना ही आपको ध्यान रखना. Next comes debt to total assets ratio, मतलब what percentage of total assets are my debt. Once again similar assumption over here कि अगर debt में कुछ नहीं दिया है, you are supposed to take only long term debt. Very very important. Next comes capital gearing ratio. इसका ना अपना लॉजिक है. A very very unique ratio over here. See, मुझे एक बात बताओ. In case, see, equity shares, there are 3 types of इन्वेस्टमेंट्स इन अ कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर. इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, एंड देयर कैन बी इन्वेस्टमेंट थ्रू डिबेंचर्स, राइट. सो मुझे एक बात बताओ, कैन आई से डिबेंचर्स का इंटरेस्ट आई हैव टू पे इट एट एनी कॉस्ट? यस सर, यू टोल्ड अस इन लेवरेज एनालिसिस दैट दिस इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, ये तो पे करना ही पड़ेगा. व्हेन इट कम्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड, कैन आई से दे गेट अ प्रेफरेंशियल राइट इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल? तो उनको भी प्रायोरिटी बेसिस पे आई हैव टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड्स. डिबेंचर होल्डर्स को आई हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन प्रायोरिटी बेसिस. तो भाई साहब, अगर कैन आई से इफ आई डू नॉट पे दीज पेमेंट्स, अगर मैंने इन पेमेंट्स को नहीं किया तो कैन आई से दे विल गेट एंग्री. सी, सो इफ प्रेफरेंस डिविडेंड एंड इंटरेस्ट मैंने मिस कर दिया, वो लोग गुस्सा हो जाएंगे. सो प्रेफरेंस डिविडेंड एंड डिबेंचर होल्डर्स को आई कॉल विद लव द पीपल हु गेट एंग्री. इन लोगों को मैं प्यार से गुस्सा करने वाले लोग बुलाता हूँ, ठीक है. बट इक्विटी डिविडेंड का तो वी ऑल नो, कभी कभी यू गेट डिविडेंड, समटाइम्स यू डू नॉट गेट डिविडेंड. यस, संयम जैन सर, फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले इसे पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, नॉट टू वरी अबाउट इट. रिविजन लेक्चर है तो थोड़ा ये पेस पे चलेगा, बट इफ यू कैन मेक अप विद द पेस तो यार कोई इसमें
वो नहीं है, ठीक है। बट हाँ, अगर आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा बाउंसर जाएगा दिमाग से, ओके, बिकॉज लॉजिक्स के साथ मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, बट इट इज़ एट अ क्विक पेस, ओके। सो पेस बना सकते हो तो नथिंग बेटर देन दैट, बट अगर पेस नहीं बना पा रहे हो देन यू विल हैव टू स्टडी लॉजिकली फर्स्ट, ओके। कंटिन्यूइंग, गुस्सा करने वाले द पीपल हु गेट एंग्री फर्स्ट। नेक्स्ट, शांत रहने वाले। नाउ व्हाट अबाउट शांत रहने वाले? सी, इक्विटी डिविडेंड का वी नो, कल उठ के डिविडेंड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। पेइंग इक्विटी डिविडेंड इज नॉट मैंडेटरी, सो इफ इक्विटी डिविडेंड इज मिस्ड, शेयर होल्डर्स वोंट गेट एंग्री, वो लोग शांत रहेंगे। नाउ व्हाट इज कैपिटल गियरिंग रेशियो? गुस्सा करने वाले अपॉन शांत रहने वाले। इन इंग्लिश, पीपल हु गेट एंग्री अपॉन पीपल हु स्टे साइलेंट। Who are the people who get angry? Preference shareholders and debenture holders. So debentures plus preference share capital will come in the numerator. मतलब गुस्सा करने वाले divided by the people who stay calm when their payment is not done. कौन से लोग शांत रहते हैं भाई साहब? इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। मॉड्यूल में ना इसमें शेयर होल्डर्स इक्विटी लिखा हुआ है, बट मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करवा दिया दैट शेयर होल्डर्स इक्विटी और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड मींस इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। वेरी वेरी सिंपल। तो गुस्सा करने वाले, शांत रहने वाले। गुस्सा कौन होते हैं? डिबेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। शांत कौन रहते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स और उनमें साथ में रिजर्व्स एंड सरप्लस वाले। That's it. This was all about capital gearing ratio. Next is proprietary ratio. Once again, what is proprietary ratio? It is proprietary fund. Now very very important. There is something called as equity shareholders fund, and there is something called as proprietary fund. Equity shareholders fund or shareholders equity, okay, and there is something called as proprietary fund, okay. See, now इन दोनों का डिफरेंस पता है क्या है? What is equity shareholders fund? It is equity share capital plus reserves and surplus. इसी में if I add my preference share capital ना, I will come to proprietary fund. यही डिफरेंस है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। पीपल गेट अ लॉट ऑफ कंफ्यूज ओवर हियर, सो इट इज नथिंग। इफ आई एड इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, आई गेट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स इक्विटी। इफ आई एड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आई गेट टू प्रोप्राइटरी फंड, एंड इसी को प्रोप्राइटरी फंड को आई ऑल्सो कॉल्ड एज नेटवर्थ। These are the variable terms जो इंस्टीट्यूट यूज कर सकता है एग्जाम में, सो यू हैव टू स्टे अपडेटेड विद दीज। सो व्हाट इज प्रोप्राइटरी रेशियो? प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स, मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स आर माय प्रोप्राइटरी फंड। प्रोप्राइटरी फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दैट्स इट। एक बार ये पढ़ लेता हूँ। प्रोप्राइटरी फंड मीन्स नेटवर्थ, ईएससी, रिजर्व्स, पीएससी, डन। सर रेगुलर लेक्चर नहीं लेते आप, मतलब वाईटी पे नहीं डालते? नो, आई डू नॉट पोस्ट रेगुलर लेक्चर्स ऑन वाईटी, दे आर पेड। Anyways, next is coverage ratios. Now very very simple. The very first part is debt service coverage ratio. अब debt service coverage ratio क्या होता है ध्यान से सुनना। इसको भी याद कराने के लिए I have a very brilliant example. See, let's say for example, there is a person called Mr. Vasuli. I don't know if you have seen Golmaal movie or not. वसूली भाई करके एक कैरेक्टर है। Now there is a person who is Mr. वसूली। वसूली का मतलब पता है क्या होता है? It is recovery agent. मतलब वो पैसा नहीं देते तो वसूली आता है ना। हाँ, सो वसूली को चाहिए इंटरेस्ट एंड वसूली वांट्स इंस्टॉलमेंट। वसूली को क्या चाहिए? ही वांट्स इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। नाउ व्हाट डू यू हैव? सी, in income statement you have something called as profit after tax. Income statement का concept was discussed in leverage analysis chapter. Income statement में there is something called as profit after tax. Now there is something over here which is in terms of non-cash expenses. I will add back depreciation. Why? Because depreciation तो मेरे भाई सिर्फ एक ऐसा expense है which I have charged in profit and loss account. Is there any actual cash outflow which I have incurred while charging the depreciation expense? No. So depreciation सिर्फ एक बुक्स का खर्चा है, उसको मैंने एक्चुअली चार्ज नहीं किया, उसके रिलेटेड कोई एक्चुअली कैश आउटफ्लो नहीं है, सो आई विल एड दैट बैक। सेकेंडली, ऑफ कोर्स, हाउ वुड आई हैव अराइव्ड ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? कैन आई से आउट ऑफ ईबीआईटी फर्स्ट आई वुड हैव रिड्यूस्ड माई इंटरेस्ट, फिर ईबीटी माइनस आई हैव डन टैक्स पेड, तब जाके पीएटी आता है। तो भाई साहब इंटरेस्ट मुझे जिस झोली में से भरना है उस झोली में इंटरेस्ट तो ऐड करो। लेट्स से आई वांट टू पे 2 रुपीज़ इंटरेस्ट और 100 रुपीज़ इंटरेस्ट, फर्स्ट तो वो इंटरेस्ट का फिगर मेरे को ऐड करना पड़ेगा ना। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीसिएशन प्लस इंटरेस्ट, ये तीनों मिला करके मेरे पास जो झोली है, द बैग विच आई हैव, आउट ऑफ दैट आई विल पे इंस्टॉलमेंट अमाउंट टू वसूली, आई विल पे इंटरेस्ट अमाउंट टू वसूली। सिंपल एग्जाम्पल टू रिमेंबर। ओके, सो व्हाट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो? बेसिकली इसका फाइनेंशियल टर्म्स में क्या मतलब होता है? दैट व्हाट इज द coverage which is available to me as a company if I want to discharge my debenture payments of interest as well as installment. So उसमें
profit after tax, debenture, depreciation or non-cash expenses, and interest, out of which I pay interest and installments. Okay. सर जो आपने लेवरेज का रिवीजन करवाया है पहले वो पूरे चैप्टर का है? यस, और इनफैक्ट ऑल द लेक्चर्स आर फुल चैप्टर रिविजन विद क्वेश्चन सॉल्विंग. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कम्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. अब जैसे डेट सर्विस कवरेज करवाया ना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, बट इट इज वेरी वेरी सिंपल. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इनकम स्टेटमेंट व्हेन इट कम्स टू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. मैंने क्या बोला था? सी, आप कैन आई से EBIT में से यू रिड्यूस योर इंटरेस्ट सो यू कम टू अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस. सो कैन आई से इंटरेस्ट का फिगर whether you will be able to repay your interest or not, can I say आप EBIT का जो फिगर है उसके हिसाब से डिटरमाइन करोगे. Let's say for example I have EBIT of 100 rupees, interest is of 20 rupees. So of course your EBIT should be greater than your interest na. So this interest coverage ratio, if it comes greater than 1, it means you have sufficient interest coverage, or you have sufficient payments, or you have sufficient cash flow to cover your interest. So it is EBIT upon interest. वैसे ही preference dividend का क्या होगा? Profit after tax में से you reduce preference dividend. So preference dividend coverage ratio is profit after tax divided by preference dividend. And what about equity? Equity dividend. Can I say you take decision on the basis of earnings for equity? So अर्निंग्स फॉर इक्विटी और अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड और डिविडेंड पर शेयर. सिंपल एज दैट. तो इसमें तो इनकम स्टेटमेंट ही याद रखना था. द यूनिक रेशियो ओवर ईयर वाज दिस, डेट सर्विस कवरेज रेशियो. आई होप दिस मच इज क्लियर. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, जो डिटरमाइन करते हैं कि वेदर योर कंपनी विल बी सॉल्वेंट इन द लॉन्ग रन और नॉट. लंबे समय तक धंधा चला पाओगी नहीं. नाउ कम्स टर्नओवर रेशियोज. अब टर्नओवर रेशियोज की खास बात बोलूँ क्या है? व्हेनेवर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टर्नओवर रेशियो, इन द न्यूमरेटर will always consist of either sales or cost of goods sold. खास बात है, कोई भी टर्नओवर रेशियो आया ना, एंड एक और इम्पॉर्टेंट है ना, अनदर सेटिस्फैक्टरी थिंग ओवर हियर इज दैट व्हेनेवर it comes to turnover ratio ना, ICI will mention the total asset turnover ratio, fixed asset turnover ratios. तो इनको डिटेक्ट, इनका फॉर्मूला याद करना बड़ा आसान होता है. ओके, सो लेट मी टेल यू द वेरी फर्स्ट इज टोटल एसेट टर्नओवर. सर ये नोट्स कहाँ मिल सकते हैं? ब्रदर दीज आर पेड नोट्स है ये. ओके, मैं लिंक डाल दूंगा गूगल फॉर्म का. यू विल हैव टू पेटीएम टू द टीम दिस अमाउंट, एंड वाया ईमेल ई बुक्स आपको मिल जाएगी. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द ई बुक. लेट्स कंटिन्यू. टोटल एसेट टर्नओवर. सो टोटल एसेट टर्नओवर क्या होता है? इट इज आइदर सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय क्लोजिंग और एवरेज टोटल एसेट्स. सर कब क्या लेना है? न्यूमरेटर में भी यू गेव अस 2 choices, डिनोमिनेटर में भी यू गेव अस 2 choices. नॉट टू वरी, आई हैव नोट डाउन साइड. पहले सिर्फ ये देख लो, ठीक है. व्हाट अबाउट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर? सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय आइदर एवरेज फिक्स्ड एसेट्स और टोटल फिक्स्ड एसेट्स. तो पहले बेसिक याद करो, कब क्या लेना है. आई एम टेलिंग यू, डोंट वरी. सो आई होप दीज 2 ratios आर राइट नाउ क्लियर इन ऑन एन एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू. अब इधर आ जाओ. दीज आर द नोट्स विच विल क्लेरिफाई थिंग्स. In total asset turnover ratio and fixed asset turnover ratio, give priority to sales if nothing is mentioned in the question. तो आपका जो पहला डाउट था ना, that sales ले COGS ले, sales ले COGS ले. If question mentions nothing, always use sales. But if question expressly mentions that total asset turnover ratio is based on COGS, fixed asset turnover ratio is based on COGS, तो भाई साहब cost of goods sold लेना. But if nothing is mentioned in these 2 ratios, please take sales as your numerator. ओके, नाउ कमिंग टू डिनोमिनेटर. यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है. ये एक पॉइंट ना आई वुड सजेस्ट आप रट्टा मार दो. जनरली आई डोंट टेल यू टू रट्टोफाई थिंग्स, बट ये एक पॉइंट में, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट पे आपको रट्टा मारने बोल रहा हूँ. दैट इन टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो ना, फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू एवरेज टोटल एसेट्स, एंड व्हेन इट कम्स टू फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, यूज ओनली क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स. ICI हैज रिसेंटली आस्क्ड एन एग्जाम क्वेश्चन May 25 का. आई विल बी डूइंग इट इन टुडेज सेशन, बट उसमें उन्होंने ये चीज़ फॉलो की है. फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो उन्होंने डिनोमिनेटर में क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स लिया हुआ है. आई विल टेल यू, नॉट टू वरी, आई विल मेक यू सॉल्व द क्वेश्चन. बट ये छोटी सी चीज़ रट्टा लगानी है, तो एक बार लिख लेते हैं. सी, समथिंग कॉल्ड एज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, समथिंग कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो. बोथ में व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू सेल्स, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू सेल्स. बट इन टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, इन डिनोमिनेटर प्लीज टेक एवरेज टोटल एसेट्स, that is opening total assets plus closing total assets upon 2, जो आप normally करते हो. and when it comes to fixed asset turnover ratio, please do closing fixed assets. इतना खाली ध्यान रखना है. okay, this much is clear. so these 2 points are very very clear. now
Next ratio comes as inventory turnover ratio. Now what about inventory turnover ratio? Once again it can be sales or cost of goods sold divided by closing or average inventory. अब ध्यान से सुनना, inventory turnover ratio क्या है? अब देखना, see, turnover ratios का logic भी I will just tell you that for every unit of total asset, for every unit of a fixed asset, how much sales you are generating. Let's say अगर मेरे business में 1 rupee of fixed assets है, let's say for example I employed 100 rupees of fixed assets in my business. Simultaneously my sales grew up by 500 rupees. मैंने 100 रुपये के फिक्स्ड एसेट बिजनेस में लगाए जिससे मेरे सेल्स 500 रुपये से बढ़ गई. सो व्हाट इज माई टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो? इट इज़ 5 टाइम्स. सो एसेट्स एम्प्लॉय होते, लिक्विडिटी आती है, उससे प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होती है, समथिंग लाइक दैट. नेक्स्ट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. सो फॉर एवरी यूनिट ऑफ इन्वेंट्री आई एड what is the amount of additional sales I generate. ऐसा आप इसको इंटरप्रीट कर सकते हो. सो इट इज सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय क्लोजिंग और एवरेज इन्वेंट्री. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर्टिकुलर रेशियो में इज अ बिट डिफरेंट. एंड देखो मैं बोलूँ टोटल एसेट याद नहीं रहेगा एक बार के लिए चलेगा. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस वोंट बी आस्क्ड इन एग्जाम, मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट वाले ही लिख रहा हूँ. बट प्लीज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज मोर इंपॉर्टेंट देन दीज टू. मैं सिर्फ प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज मोर इंपॉर्टेंट. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट over here. In case of inventory turnover ratio, when nothing is mentioned in question, cost of goods sold will come in numerator and closing inventory will come in denominator. So apart from here, in case of inventory turnover ratio, पहले दो में आप सेल्स लेते थे ना, यहाँ पर you will prioritize cost of goods sold and closing inventory on priority. अच्छा, I have another trick जिससे आप ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो याद कर सकते हो. अगर इंस्टीट्यूट चाहती है कि आप एवरेज इन्वेंट्री लो डिनोमिनेटर में, इफ इंस्टीट्यूट वांट्स दैट यू टेक एवरेज इन्वेंट्री इन द डिनोमिनेटर ना, आईसीआई विल गिव यू डेटा, सम डेटा रिलेटेड टू ओपनिंग और एवरेज इन्वेंट्री. एक क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में, आई विल बी मेकिंग यू सॉल्व दैट क्वेश्चन, उसमें एवरेज इन्वेंट्री लेना है. बट इफ नथिंग इज मेंशन्ड, फर्स्ट प्रायोरिटी इन न्यूमरेटर गोज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फर्स्ट प्रायोरिटी इन डिनोमिनेटर गोज टू क्लोजिंग इन्वेंट्री. ओके, द सेम गोज फॉर रिसीवेबल्स टर्नओवर. अब सी दिस इज लॉजिकल. अब ये तीन रेशियोज में थोड़ा सा रट्टा लगाना था, यहाँ पे देयर इज लॉजिकल. नाउ सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स. वन इज कैश सेल्स, वन इज क्रेडिट सेल्स. रिसीवेबल्स किस पे क्रिएट होते हैं? आर माई रिसीवेबल्स क्रिएटेड ऑन माई कैश सेल्स? आर माई रिसीवेबल्स क्रिएटेड ऑन माई टोटल सेल्स? और रिसीवेबल्स आर क्रिएटेड ऑन क्रेडिट सेल्स? सर क्रेडिट सेल्स, आप क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या मारते हो? डेटर्स और रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो सेल क्रेडिट सेल जो क्रिएट हुई, सामने आपने डेटर कोई डेबिट किया ना. सो रिसीवेबल्स आर क्रिएटेड ऑन क्रेडिट सेल्स. सो इन न्यूमरेटर वी विल टेक क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय क्लोजिंग और एवरेज रिसीवेबल्स. यहाँ पे भी इफ इंस्टीट्यूट वांट्स यू टू टेक एवरेज रिसीवेबल्स, डेटा विल बी गिवन. नेक्स्ट कम्स पेबल्स टर्नओवर. अब जैसे क्रेडिट सेल्स पे रिसीवेबल्स आर क्रिएटेड, लाइक ऑन क्रेडिट सेल्स रिसीवेबल्स आर क्रिएटेड. सो कैन आई से ऑन क्रेडिट परचेजेस my payables will be created. Journal entry, very simple, purchase account debit to creditors account or payables account, whatever you say. Okay, so payables turnover is what? Purchases divided by closing or average payables. These 5 turnover ratios, I hope they are very 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 clear to you. Okay, so आप यहाँ पर ध्यान देना. Just remove this point. अब एक और चीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपको मैंने डेटर्स टर्नओवर रेशियो जस्ट अभी बताया. रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज व्हाट आई टोल्ड यू राइट नाउ ओनली. यस सर. व्हाट इज रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो? इट इज क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज और क्लोजिंग रिसीवेबल्स, राइट? यस सर. नाउ देयर विल समथिंग, कभी कभी क्या होगा ना, आपको इंस्टीट्यूट देगा डेटर्स वेलोसिटी, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटर्स कलेक्शन पीरियड. इसके बारे में वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन वर्किंग कैपिटल. बट नाउ एज फार एज रेशियो एनालिसिस इज कंसर्न, आपको डेटर्स वेलोसिटी अगर दिया जाएगा ना, डोंट गेट कंफ्यूज. अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज ओवर हियर. इनफैक्ट मैं भी जब इंटर में था ना, मैं भी इसमें बहुत कंफ्यूज होता था. सो मैंने एक ट्रिक बनाया, मैं वो ट्रिक में आपको शेयर करता हूँ. व्हाट इज द ट्रिक? सिंपल. इफ यू वांट टू टेक आउट डेटर्स टर्नओवर व्हेन डेटर्स वेलोसिटी इज गिवन ना, जस्ट फर्स्ट 2 steps. फर्स्ट चेक आउट वेदर इट इज इन मंथ्स, डेज और ईयर्स, एंड देन डिवाइड बाय द सेम. जैसे मैं बोलता हूँ डेटर्स कलेक्शन पीरियड और डेटर्स वेलोसिटी इज 3 months एंड आई वांट डेटर्स टर्नओवर रेशियो, आई विल सिंपली डू 12 months अपॉन दिस 3 months. डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज 4 times. Similarly, if I am given payables turnover ratio,
विच इज क्रेडिट परचेजेस अपॉन क्लोजिंग ऑफ एवरेज पेबल्स, ठीक है, एंड sorry, if I want to take out payables turnover ratio, whereas creditors payment period or creditors velocity is given to me, let's say for example as 60 days, what will I do? 365 or 360 days, because data is given in days, so 365 360 days divided by 60 days, 360 days assume karte, so it is 6 times. This is a trick जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ. Okay, this is a trick which I am telling you right now. बहुत ही बढ़िया. So debtors or creditors velocity is either 360, 52 or 12 divided by receivables or my payables turnover. Important point है, ध्यान से. Next, अच्छा, there will always be, अच्छा एक और चीज आप देखोगे that I have not said debtors turnover ratio. ये important है, इस पे क्वेश्चन है मॉड्यूल में, I'll be making you solve, not to worry. There is a concept which says that receivables मीन्स नॉट ऑलवेज डेटर्स. रिसीवेबल्स जो है ना वो हेड होता है. लाइक व्हेन यू सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू विल बी शोन समथिंग कॉल्ड एज रिसीवेबल्स. रिसीवेबल्स के अंदर देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. देर आर बिल्स रिसीवेबल, देर आर सन्ड्री डेटर्स, ओके, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. सो सेम कॉन्सेप्ट ओवर ईयर. रिसीवेबल्स का पार्ट होता है डेटर्स. एंड डिड आई एवर से दैट दिस इज डेटर्स टर्नओवर रेशियो? सिंस द बिगिनिंग, सिंस आई एम टीचिंग यू दिस रेशियो, मैं शुरुआत से एक ही चीज बोल रहा हूँ कि बॉस ये रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है, ये पेएबल्स टर्नओवर रेशियो है. पेएबल्स टर्नओवर रेशियो इज डिफरेंट, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज डिफरेंट, ठीक है. डेटर्स में एंड बिल्स पेएबल का मिला करके जो आता है दैट इज रिसीवेबल्स. सिमिलरली क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल टुगेदर इज पेएबल्स, एंड व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग पेएबल्स टर्नओवर रेशियो एंड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. एक क्वेश्चन आएगा, यू विल गेट मोर क्लैरिटी व्हेन आई सॉल्व दैट. ओके, अभी के लिए इतना याद रखो. So this was all about your turnover ratios. Now moving on to my next profitability ratios. You already know this. Gross profit ratio is gross profit. You know that. Okay. Next is net profit ratio. बस इतना ध्यान रखना that net profit ratio in terms of financial management means profit after tax. सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको. Okay, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको that this is net profit means profit after tax upon sales into 100. That's it. Okay. Next is operating profit ratio. अब ये इट इज EBIT. अच्छा, जैसे मैंने बोला ना दैट नेट प्रॉफिट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बट इतने से काम चल जाएगा नहीं. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट. लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू दैट कॉन्सेप्ट नाउ. उसके बाद आपका पूरा ज्ञान कंप्लीट हो जाएगा, इसमें पूरा फुल नॉलेज आपको मिलेगा. सी, मुझे एक बात बताओ, हाउ डू यू टेक आउट ग्रॉस प्रॉफिट? सर वेरी वेरी सिंपल. सेल्स में से इफ वी रिड्यूस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है. नाउ आउट ऑफ दिस ग्रॉस प्रॉफिट देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. जो भी मेरे डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करूँ, आई विल कम टू EBIT विच इज ऑल्सो नोन एज माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो कैन आई से दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो is gross profit minus operating expenses divided by sales into 100? Yes sir, you can see this. And gross profit minus operating expenses, what did I tell you? It is earnings before interest and tax. ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए. बहुत ही बढ़िया. कूल 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 कूल. देखो यार, एक एक चीज आई एम कवरिंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस रिविजन बैच. ईच एंड एवरीथिंग इज व्हाट आई एम कवरिंग, है ना. तो यार एक लाइक तो बनता है सेशन के लिए. जस्ट गो लाइक द सेशन, सब्सक्राइब द चैनल, मजा आ जाएगा. ओके, डन 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 डन. नाउ नेक्स्ट थिंग, देर इज समथिंग कॉल्ड एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. मतलब अब ध्यान से सुनना, वी हैव 3 terms in total. One, what we have is equity shareholders fund, or you can say shareholders equity. One, what we have is proprietary fund or net worth, and now we have a third term that is capital employed. मतलब सच बोलूं बच्चे, इन 3 टर्म्स में जो महा कंफ्यूज होते हैं, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि मैं भी उतना ही कंफ्यूज हो जाता. बट देन ना आई मेड अ क्विक चार्ट. क्या चार्ट है इसको? इफ आप भी ये 3 चीज़ों में कंफ्यूज होते हो, इफ़ यू गेट कंफ्यूज इन दीज 3 थिंग्स ना, एक छोटा सा सिंपल सा चार्ट बना लो. इफ़ यू रिमेंबर दिस यू विल नेवर गेट कंफ्यूज. सी, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, नॉट लाइक दिस. सी, सिंपल कॉन्सेप्ट है. इक्विटी शेयर कैपिटल में इफ आई एड रिजर्व्स एंड सरप्लस ना, I will come to what? Equity shareholders fund or shareholders equity. Okay. Next, if I add preference share capital in this, I will come to proprietary fund or net worth. Sir, यहाँ तक तो we have already discussed. Now the new thing,
if I add long term debt in this, then I will come to my total capital employed. Cool? Yes. Now you will, now if अगर ये या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो या फिर just draw it somewhere, you will never get confused between these three terms then. And now you will understand what is return on capital employed. It is earnings before interest and tax, मतलब operating profit upon capital employed. अब ध्यान से सुनना, what is the logic of this ratio? See, can I say capital employed includes debentures, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, ऑल फोर, सारी चारों की चारों चीजें इसमें मेरी आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड में. हाँ जी बॉस, चारों की चारों चीजें आपकी आ गई. सो कैन आई से द रिटर्न ऑन ऑल फोर थिंग्स शुड ऑल्सो बी देयर. अगर चारों चीजें इन्वेस्टेड जो है उसको मैं डिनोमिनेटर में ले रहा हूं और रिटर्न का लॉजिक क्या बोलता है? रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट. सिंपल लॉजिक. तो चारों चीजों का इन्वेस्टमेंट है तो ऑन दी कॉन्ट्रेरी चारों चीजों का रिटर्न भी होना चाहिए. हाँ जी. सो कैन आई से ईबीआईटी में से ही आई फर्स्टली पे माई इंटरेस्ट, आई देन पे माई प्रेफरेंस डिविडेंड, आई देन पे माई इक्विटी डिविडेंड, एंड जो बचा आई पुट इट इनटू माई रिटेन्ड अर्निंग्स. सो ईबीआईटी इज ओनली द वाओ sorry for that. So EBIT is only the figure which covers the payments of all the four investors, and that is why return on capital employed is what? It is EBIT divided by capital employed. अच्छा, काफी बार क्या होगा पता है, आपको capital employed नहीं दिया जाएगा, so you can also take total assets. Very rare situation, this occurs more in capital structure chapter. You can go and refer our capital structure chapter revision after this is over, of course. उसमें ना there is a question where ROC, इसमें I have solved a question whereas where ROCE में I have taken total assets in denominator. मैंने आपको बोला था कि when ratio analysis will come I will make you discuss. देखो तो इसका core logic ये है. So once again capital employed is what? Equity share capital, reserves and surplus, preference share capital, long term debt. And इसी के अलावा now there can also be a situation जब ICI आपको पूछे ROCE post tax निकालो, ROCE post tax निकालो. So it is nothing but जो आपका EBIT होगा ना 1 माइनस टी कर देने का, डिनोमिनेटर में वही चीज, फर्स्ट प्रायोरिटी कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर टोटल एसेट्स. डन. नाउ बस अभी 2 या 3 लास्ट रेशियोज आर लेफ्ट. लास्ट 2 और 3 और 4 रेशियोज आर लेफ्ट. यस, लास्ट 4 रेशियोज आर लेफ्ट. उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग टू सॉल्व अवर क्वेश्चंस. इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू कर देंगे. बहुत ही बढ़िया. लेट्स कम. जस्ट अ मिनट. या नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन नेटवर्थ. अब मैंने आपको बोला था नेटवर्थ क्या होता है. इट इज प्रोप्राइटरी फंड. चार्ट रेफर करेंगे. नेटवर्थ कम्स ओवर हियर. इट हैज इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अब जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड में सोचा था वैसे यहीं पे सोचो. द थिंग विच यू थॉट इन कैपिटल एम्प्लॉयड, थिंक द सेम ओवर हियर. लाइक कैपिटल एम्प्लॉयड का रिटर्न वॉज EBIT बिकॉज इट कवर्ड ऑल द पेमेंट्स. नाउ व्हाट इज देयर इन प्रोप्राइटरी फंड? इट हैज द पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, इट हैज द पेमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, इट हैज द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. So can I say out of profit after tax में से I firstly pay preference dividend, I first then pay equity dividend, and जो बचता इसी में से जाएगा retained earnings में. This is the flow of income statement. Simple flow है income statement का. So when it comes to proprietary fund, can I say profit after tax or net profit is the figure. इसमें सिर्फ डिवेंचर का इंटरेस्ट नहीं है वरना EBIT आ जाता. Okay, so it is PAT upon proprietary fund into 100 और net profit upon proprietary fund into 100. बहुत ही बढ़िया. अब ये वाला तो यार मुझे पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज अ रेशियो विच इज प्रैक्टिकली यूज इन स्टॉक मार्केट. यू गूगल एनी शेयर प्राइस, आप कोई भी शेयर का प्राइस गूगल करोगे ना या moneycontrol.com और यू नो ब्रोकर विद एनी ब्रोकर, इफ यू चेक योर शेयर प्राइस ही विल ऑलवेज गिव यू दिस इंफॉर्मेशन. P मतलब क्या है? what percent of market rate is my earnings, or I can also say this that how many times is my market price when it compares to my earnings. Let's say EPS जो है 5 रुपीज़ है और मार्केट में शेयर का दाम 25 रुपया चल रहा है. EPS is 5 rupees. In the stock market the share is trading at a price of 25 rupees. So PE ratio is 5 times. It was जब लोगों को एक और फैक्ट बता देता हूँ, काफ़ी लोगों को ना पहले नॉलेज नहीं थी. Nowadays financial literacy is becoming a part of our everyday lives, but many people did not have the knowledge of financial literacy earlier. So what they used to do, only on the basis of P वो डिसाइड करते थे कि मुझे शेयर में इन्वेस्ट करना है कि नहीं. Like I made my mind कि if the PE is greater than 10 I will invest or I will not invest. So if the EPS of a company is 10, can I say 100 रुपये से ऊपर का शेयर प्राइस नहीं होना चाहिए बिकॉज मेरे बजट के भी इश्यूज होते हैं, रिटर्न भी उतना चाहिए, लाइक दैट. सो P रेशियो वेरी वेरी सिंपल, MPS अपॉन EPS. नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन एसेट्स
आफ्टर टैक्स ये मत करना, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड. एंड नेक्स्ट इज डिविडेंड यील्ड. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पर्टिकुलर थिंग आई हैव ऑलरेडी मेड यू, दिस पर्टिकुलर यील्ड का कॉन्सेप्ट आई हैव ऑलरेडी मेड यू रिवाइज इन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर, कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर. कि देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल, बिटवीन डिविडेंड रेट and dividend yield. When I calculate rate na, it is always with respect to face value, and when I calculate yield it is always with respect to market price. ये primary difference है rate में और yield में. Similarly interest rate और interest yield, interest rate मतलब क्या, interest upon face value into 100, but when I calculate interest yield it is interest divided by market price into 100. So dividend yield is dividend divided by value of equity into 100. Value of equity is nothing but, can I say, market price per share into number of equity shares. कुछ नहीं किया, टोटलिटी बेसिस पे लिखा है. इसी को अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं ना बाय नंबर ऑफ शेयर्स, इफ आई डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, आई हैव डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100. सो डिविडेंड विद रिस्पेक्ट टू मार्केट प्राइस, जो मैंने यहाँ पे बोला था, डिविडेंड यील्ड. ओके, दिस इज डन. now all our ratios are done, but अभी रुक जाओ. there is one concept which is left, that is the concept of works cost. सारी चीज़ें हो गई है, yes, everything is done, just one last concept. उसके बाद we are heading on straight to our questions solving. okay, बहुत ही बढ़िया. there is something called as concept of works cost. now what is works cost? costing में when you studied cost and management accounting, you knew something called as gross factory cost, net factory cost. ये terms याद है? So it is raw material consumed plus direct labor plus direct expenses plus production overheads. Yes, वही यहाँ पर तुम्हारा वर्क्स कॉस्ट है. बाय द वे वर्क्स कॉस्ट ओवर हियर इज ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, या फिर फैक्ट्री कॉस्ट भी आप बोलते हो, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट वही है. बट व्हेन इट कम्स टू एफएम ना, एक ही क्वेश्चन है इस पे, बट व्हेन इट कम्स टू एफएम ना, वर्क्स कॉस्ट को आप कंसिडर करोगे एज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. ये खाली बात याद रखने वाली है, बाकी एवरी एंटायर कॉन्सेप्ट इज सेम. बस इतना ही ध्यान रखना है दैट रॉ मटेरियल कंज्यूम, वेजेस, इफ देर आर एनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस देन, एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स विल गिव यू वर्क्स कॉस्ट. एंड यहाँ पर व्हेन इट कम्स टू एफएम आपको वर्क्स कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मानना होगा. ओके, बिकॉज ऐसा क्यों, ऐसे कैसे, बिकॉज आईसीआई हैज डन इट. ऑफ कोर्स बोथ आर डिफरेंट व्हेन इंटरप्रेटेड प्रैक्टिकली, बट यहाँ पर आईसीआई ने ऐसा किया है, सो वी हैव टू गो थ्रू आईसीआई, वरना आईसीआई मार्क्स काट देगा एग्जाम में, है ना. चलो बहुत ही बढ़िया. एंड विद दिस एंटायर चैप्टर हैज बीन रिवाइज्ड विद लॉजिक्स. अब मेरे को बताओ, मुश्किल से देर विल बी 1 or 2 थिंग्स विच आई मेड यू रट्टोफाई. एक या दो चीज़ें होगी जो रट्टा मरवाई होगी, rest everything was logical. and yeah, this particular small point also 2-3 जगह है इसमें. anyways more than 90 to 95% was done logically. now let us head straight to the questions. सिर्फ रिवीजन देख के छोड़ने वालों, जनता माफ नहीं करेगी, आईसीआई माफ नहीं करेगी. चुपचाप क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है. if only revision is done and if you only rectify things, if you only understand things, ICI will not give you marks. You should be able to solve questions also. So now comes the most important part of the session. Most important part of the session, and that is solving of questions. चलो, बहुत ही बढ़िया. Let us now solve the questions. आ जाओ. Let us begin with an ICI module question. Okay. Take out your ICI module. Here we go. Okay, let's have a basic question. Okay, this particular question, practice question number 4. I take this question every time, and ये वाला क्वेश्चन है ना आपके September 25 RTP में भी पूछा गया है. Same question has been targeted in your September 25 RTP. Would like to see? इधर आओ जाओ. RTP open ही है. Here is the September 25 RTP. ये देखो, सेम क्वेश्चन हैज बीन टारगेटेड, बस नाम बदल दिया है, अमाउंट बदल दिया है. ओवर ईयर इट इज गणपति, एक मिनट, ओवर ईयर दिस इज गणपति लिमिटेड, ओवर ईयर दे हैव डन जमुनापति लिमिटेड. बस इतना ही चेंज है, बाकी पूरा का पूरा सेम है इन योर September 25 RTP. ओके, अच्छा लेट्स डू दिस फ्रॉम RTP ओनली देन, है ना. RTP से ही करते हैं तो उसी बहाने सॉल्व हो जाएगा. नाउ this particular question na, it is based on the concept of operating profit.
मैंने बोला था ना जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. यस, सेम कॉन्सेप्ट पे देयर इज अ क्वेश्चन. लेट अस सॉल्व इट. Jamunapati Limited has furnished the following ratios and information relating to the year 31st of March 2024. Sales is given, return on net worth is given. Can I say return on net worth means nothing but my net profit? Yes, but is this my net profit margin? Na 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 na. This is not my net profit margin. This is net profit. Return on net worth. Net worth का मतलब क्या है? Proprietary fund. और प्रोप्राइटरी फंड पे क्या नेटवर्थ मिलता है? इट इज माई नेट प्रॉफिट. समझ में आई बात? सो इट इज नॉट नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स. ये नेटवर्थ मतलब प्रोप्राइटरी फंड. प्रोप्राइटरी फंड पे व्हाट रिटर्न डू यू गेट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. देखा कॉन्सेप्ट टेस्ट. रेट ऑफ इनकम टैक्स इज गिवन, शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स, ओके. करंट रेशियो इज गिवन. नाउ सी दिस इज माई नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट टू सेल्स. इन्वेंट्री टर्नओवर मैंने अभी बोला था, इफ नथिंग इज मेंशन इन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, न्यूमरेटर में भी cost of goods sold आएगा, numerator will be cost of goods sold and denominator will be closing inventory, because there is no data in this question which is pertaining to average or opening inventory. ठीक है, inventory turnover, see nothing is mentioned. Cost of goods sold directly is given. Interest on 15% debentures 1,05,000, receivables and payables. On the very first thing what you need to calculate is the operating expenses for the year ended 31st March 24, and then you have to prepare a balance sheet on 31st of March 2024. आ जाओ. Very simple question, let us solve this. Now a pro tip while you are solving ratio analysis questions. A pro tip when you are solving ratio analysis questions क्या होता है पता है? As and when you keep on using the data ना टिक मारते जाओ. Even in exam you can do this. Exam में by the way you are allowed to make ticks with pencil. तो जैसे जैसे एक एक डेटा यूज करते जाओ, just you know keep on ticking the data. आ जाओ. So let us solve this particular question in your examination format only. अगर ये same question exam में आया then how you will solve? In the same format like I showed you. So firstly, what they have told us is operating expenses. Now very important. Now apply the concept. सबसे पहले मैंने क्या बोला था? From my sales, if I reduce my cost of goods sold, I come to gross profit. And out of my gross profit, if I reduce my operating expenses, I come to operating profit or EBIT. This is my operating profit. This is where the concept is. Okay, बहुत ही बढ़िया. This is where the concept is. Yes. अब देखो, sales has been given to you as 70 lakhs. So 70 lakhs is my sales. Next. Yeah, cost of goods sold is given to me as 24 lakhs. So 24 lakhs will be reduced from here. So अब what is my gross profit? 70 lakhs minus 24 lakhs comes to 46 lakhs. This is done. Now out of this, if I reduce my operating expenses, I come to EBIT. But operating expenses ही निकालना है, and they have never given me what is my earnings before interest and taxes. So now see, now I will apply the basic logic of income statement. Concept इतना ही था, but now it is a common sense point. See, if I reduce my EBIT, I will if I reduce interest on debentures on my from my EBIT, I will come to earnings before tax or profit before tax. And इसमें से if I reduce my tax का figure, I will come to earnings after tax. Now very important, very important. I am given two more things. मुझे दो और चीज़ें दी हुई है. I am given net profit to sales. मतलब net profit में मैंने क्या बोला था? What is net profit? Profit after tax और earnings after tax. And मेरे पास sales भी है. So can I say that I now what I will do is that कि मैं एक working note बनाऊंगा. I will make a working note. I will take out earnings after tax और profit after tax and reverse calculation में I will take out my operating expenses as balancing figure. सर क्या बोला आपने? देखो मैं करवाता हूँ. Firstly, write over here working note number 1. Net profit or profit after tax. How is it is? How it is? Now I know that return on net worth. What is my return on net worth? Can I say it is profit after tax divided by my sorry, not return on net worth, my net profit margin
is profit after tax divided by sales into 100. Simple as that. Now, what is my net profit to sales? It is 7%. So, 7 is equals to profit after tax, I don't know. Sales is being given to me as 70 lakhs into 100. So, finally, what is my profit after tax? देख लो. 70 multiplied by 7%. It is 4,90,000. This is my profit after tax. Now, 4,90,000 is my profit after tax. बहुत बढ़िया. I hope this is clear. Now, next data what I have is that tax rate. See, rate of income tax is 30% over here. So, can I say that if earnings before tax is 100%, out of which 30% is gone for tax, so 70% is my earnings after tax. So, what is earnings before tax? Simply 4,90,000 into 100 upon 70. This is 7 lakhs. ये हो जाता है मेरा 70 लाख. एक मिनट, 7 lakhs है ना. हाँ, 70 lakhs कहाँ से आ गया? Sorry. And out of 7 lakhs, what is the amount of tax which I would have paid? 2,10,000. So बचता है 4,90,000. Great. Next, I will be using my this figure. Interest on 15% debentures is 1,05,000. Now this is not the debenture wala figure. This is the interest wala figure. Okay, beware. So this is 1,05,000. So now can I say that out of 8,05,000, ये देखो 8 लाख कितने में से 1,05,000 माइनस करोगे तो 7 लाख बचेंगे. So re-add this. So if I add back the interest, EBIT is going to be 8,05,000. Great. And see, out of my, now the concept, out of my gross profit, if I reduce my operating expenses, I come to operating profit or EBIT. So as the balancing figure, what is my operating expenses? It is 37,95,000. देखा? This is my figure. एक बार देख लेते हैं इसका आंसर. आगे आ गया मैं बहुत. $37,95,000 is the amount of my operating expenses. Done. Okay. Next, what we have to do is that we have to prepare a balance sheet. आ जाओ. So let us prepare a balance sheet. So what is there in the balance sheet? Firstly, we have share capital. We have share capital. Next, we have reserves and surplus. Next, we have 15% debentures. And next we have payables. Okay, yes. Now we have fixed assets. In the current assets, we firstly have stock. We have receivables. And then we have cash. अब आप देखोगे ना, 2 figures would have been given to you. See, so this is the amount of data which I have used till now. Now देखो, receivables and payables 3-3 लाख का मुझे दोनों दिया हुआ है. So 3 lakh rupees of payables, 3 lakh rupees of receivables. ठीक है? So these two data is already done and dusted. Now see, inventory turnover ratio is given to me.
inventory turnover ratio is given to me. So for stock, I will be using working note number 2. So यहाँ पे working note 1 है ना. Let us prepare working note number 2 over here. Closing stock या closing inventory. Now inventory turnover ratio. What did I tell you? मैंने आपको क्या बोला था? जब कुछ ना दिया हो, न्यूमरेटर में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा, एंड डिनोमिनेटर में सी हैव दे गिवन एनी डेटा रिलेटिंग टू ओपनिंग इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री? नो. सो यहाँ पे आएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री. लॉजिकली वी विल गो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 10 times. What is my cost of goods sold? I have already cost of goods sold, I think in question it is already given as 24 lakhs upon closing inventory. So through this my closing inventory comes to 2,40,000. Okay, so stock is 2,40,000 and inventory turnover ratio ka data is also being used. Just a minute. Yeah. Now next comes what? Next comes my current ratio. Now what is my current ratio? Can I say I will be able to calculate my current assets over here? Just a minute. Current assets इसमें निकलेगा. Okay, great. अभी करंट एसेट्स नहीं निकालते. फर्स्टली लेट अस टेक आउट दिस प्रोप्राइटरी फंड निकालते हैं. लेट अस टेक आउट द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. यस, फर्स्ट लेट अस टेक आउट कैपिटल एम्प्लॉयड का सारा फिगर्स. ठीक है, ये अभी निकलेगा नहीं. सो वी विल बी फर्स्टली टारगेटिंग व्हाट? रिटर्न ऑन नेटवर्थ. और कैपिटल एम्प्लॉयड में फर्स्टली सी डिबेंचर का फिगर पहले देख लो. व्हाट इज डिबेंचर इंटरेस्ट? Can I say it is 1,05,000, right? Yes. And what is the interest rate? As clearly visible in the question, interest rate आपको 15% दिया हुआ है यहाँ पे. ओके, तो पहले तो इसको सॉर्ट कर देते हैं. सो व्हाट इज द डिबेंचर का फेस वैल्यू का अमाउंट? 105 डिवाइडेड बाई 15%, इट कम्स टू 7 lakhs. पहले तो लेट अस सॉर्ट दिस थिंग. ओके, so 7 lakhs is the amount over here. Working note number, I guess this was working note number 3. This is working note number 3. Done. Next. Now this is done. Okay, this is done. Now I have another ratio, something called as return on net worth. आ जाओ. So now next thing I will be taking out the amount of net worth. So return on net worth क्या होता है? It is, can I say net worth and उस पे और proprietary fund और उस पे the return which I get is profit after tax into 100. So return on net worth over here which is being given to me is 25% is equals to what is the amount of profit after tax which I took out? The amount of profit after tax which you took out was 4,90,000 divided by net worth or proprietary fund into 100. So what is the amount of my proprietary fund? 125%, it comes to 19,60,000. Now very important. What does come in proprietary fund? Sir, proprietary fund में ideally आना चाहिए. Look here. Proprietary fund में ideally there should be equity share capital, there should be reserves and surplus, there should be preference share capital. But if you have a look at the balance sheet over here ना, अगर तुम यहाँ पे balance sheet देखोगे तो सिर्फ share capital दिया है, reserves and surplus दिया है. इसमें से कितना equity share capital है, कितना preference share capital है, nothing is given. Not to worry. इसको ऐसे ही disclose कर दो. Okay. So can I say there will be something called as share capital जिसमें equity preference दोनों आ गया, and there will be something called as reserves and surplus. And for this particular point they have given me a ratio of share capital to reserves as 7:3. So can I say this is 7/10 and this is 3/10. Okay, 7:3 दिया हुआ है, so share capital is 7:10 and reserves and surplus is 3:10. So what is share capital? Just do 19,60,000 into 7 divided by 10, 1372.
And what about reserves and surplus? 1960 into 3 upon 10 comes to 588. So 1372 and 588 यहाँ पे आ जाएगा. 1372 and 588. Done. This is also as per working note 3, working note number 3. Now a common sense point. मेरे पास देखो लाइबिलिटी साइड सब कुछ आ गया है. आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइबिलिटी साइड एंड आई ऑल्सो नो दैट अ सीए स्टूडेंट गेट सेटिस्फाइड. सीए स्टूडेंट का असली सेटिस्फेक्शन क्या है? सर बस बैलेंस शीट का असेट और लाइबिलिटी साइड टैली हो जाए बस. तो बस वही लॉ हम यूज करेंगे. सो टोटल लाइबिलिटीज इज हाउ मच? टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड इज 1372, 588, 7 lakhs and 3 lakhs. 29,60,000. Okay, and इसी के साथ साथ 29,60,000 is also the total of my asset side. Yes sir. Total liabilities is equals to total assets. अब asset side में there are two things left. One is fixed assets, one is cash. So now write working note number 4. इससे मेरा cash निकलेगा. इधर आ जाओ. Working note number 4, cash balance. Cool. Cash balance कैसे निकलेगा? देखो, it is very very simple. What is my current ratio? It is current assets upon current liabilities. Now I will be using the final data of the question, that is current ratio. Okay, current ratio is current asset upon current liabilities. So current ratio is 2 is equals to current assets divided by. अब देखो current liabilities में यहाँ पर आ जाओ. Can I say that in current liabilities, if you analyze this entire balance sheet, current liabilities में there is only one thing and that is payables. बताओ, just a minute, I'll just drink some water. Current liabilities में there is only one thing, that is payables, and जिसका figure they have already given me in the question, 3 lakh rupees. So can I say boss, this is 3 lakh rupees only, because current liabilities में एक ही चीज है. So total current liabilities is equals to payables is equals to 3 lakhs. So what is my current assets? 2 into 3 lakhs, that is 6 lakhs. Now comes the important point. ये तो चलो समझो logical point. Now comes the important point. See, in my current assets, if you analyze the balance sheet once again, current assets में अपने पास तीन चीजें हैं. One is stock, one is receivables, one is cash. So यहाँ पर आ जाएगा current assets. Current assets का total is 6 lakhs. Now, if you have a look at the balance sheet ना, stock का value as per working note number 2, I already have as 2,40,000. Yes sir. So as per working note number 2, stock का value 240 मेरे पास already है. Yes sir, you already have this value. अच्छा, receivables value is already given as 3 lakhs. So balancing figure, what is the value of my cash balance? Simple, it is 6 lakh rupees minus 2,40,000 minus 3 lakh rupees. So this is 60,000. This is done. So as per working note number 4, this is 60,000 rupees. This is 60,000 rupees. And fixed assets, the entire balancing figure of my balance sheet कितना आ गया? 29,60,000 minus 60,000 minus 3 lakh rupees minus 2,40,000. 23,60,000 is the value of my fixed assets as a balancing figure. बहुत बढ़िया. Okay, perfect. Let us have a look at the solution. इधर आओ. So share capital, let us come over here. Share capital 1372, 588, 70 lakhs is the amount of debenture. अच्छा yes, अच्छा there is a correction error over here. This is 7 lakhs. यहाँ पे correction error, यहाँ पे correction है. This is 7 lakhs. वरना खुद सोचो ना, 70 लाख यहाँ पे लिख के total 2960 कहाँ से आ सकता है? So 7 lakhs over here and 3 lakh rupees is the amount of payables.
नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स का 2360, 2,40,000 इज द कैश, रिसीवेबल्स 3 lakhs एंड कैश इज 60,000. डन डना डन 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 डारा. बहुत ही बढ़िया. जस्ट अ मिनट. ओके, ग्रेट 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 ग्रेट. सो नाउ लेट अस हैव अ क्विक शॉर्ट ब्रेक. एक मस्त 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं एंड देन विल कंटिन्यू. ओके, नाउ what after the break we are going to solve 3 more questions after the break. 3 और सवाल हम इसे solve करेंगे and after that you will get an entire conceptual clarity of this chapter and then we'll wind up the session. ठीक है. So it's 7 PM exact 7 बजे exact it's 7 PM. अरे sorry. So we'll be having a break till 7:10. ठीक है. 7:10 को शार्प आई एम गोइंग टू रिज्यूम. सो 7:10 पे वी आर गोइंग टू टोटली रिज्यूम. जाओ, एंजॉय योर ब्रेक एंड कम बैक सून. जाओ जाओ, ब्रेक एंजॉय करो.
हाँ 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 आ जाने दो कॉपीराइट, कोई टेंशन नहीं है। आज मैं वीडियो लूंगा। चलो चलो टाइम हो रहा है, आ जाओ। बंदे बंदे की तुक बंदी, सूरत चंगी सी रत गंदी, तुर्फटे मुमर पर तू इतना क्यों अब्यूज करे, तू सबसे पैदा हुआ है कबरू, सुबह शाम ही बूज करे, शहर लगा के होता ते मैं आजा तेनू किस करांगा, दोनों मर जावांगे बेबी तब भी तुझको मिस करांगा, गाली देगा जो भी मुझको उसकी टैटे फिस करांगा। राइफल दिखा के मुशायरे लुटिए, ऊपर से कूद के आज टूटिए। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ब्रेक खत्म, आ जाओ ब्रेक खत्म। चलो 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 आ जाओ आ जाओ, ब्रेक इज एंडेड गाइस, ब्रेक इज एंडेड। वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। यस 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 सर, टेल अस वन थिंग, डोंट यू गेट कॉपीराइट ऑन योर वीडियोस? अरे नहीं, यही तो मज़ा है। देखो क्या होता है ना, जब लाइव चलता है ना तब गाने बजा देने का, एंड देन व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्डेड, वैसे भी रिकॉर्डेड देखने वाले काम की चीज़ देखते हैं, सो व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्डेड ना, ये वाला पार्ट उड़ा देने का, सो ऑटोमेटिकली वीडियो से भी कॉपीराइट चला जाएगा, है ना। दिस इज़ द फन। चलो चलो चलो, एनीवेज लेट अस कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक बार ज़रा इसको सेट कर देता हूँ। Alright, let us continue with another question. Chalo, so this was a basic question which we did just now. Now come to our ICI module ka. There is another good question. Where is the question? किधर गया कोई? हाँ ये वाला है, आ जाओ। Come to practice question number 9. ICI module practice question number 9. Now see, मैंने आपको एक बात बोली थी ना, दैट व्हेन इट कम्स टू रिसीवेबल्स, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिवाइज करवाया था। आई मेड यू रिवाइज वन कॉन्सेप्ट वेर आई सेड लेट्स सी व्हेन इट कम्स टू रिसीवेबल्स ना, अरे वेर इट इज, हाँ, व्हेन इट कम्स टू दिस टोटल रिसीवेबल्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। व्हेन इट कम्स टू पेएबल्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। मैंने बोला था देयर विल बी अ क्वेश्चन इन योर मॉड्यूल विच आई विल बी मेकिंग यू सॉल्व। भाई साहब दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में वही चीज़ टेस्ट हुई है। ओके चलो लेट अस गो, let's go. This is your practice question number 9 of the ICAI module. Following information relates to Temer Limited. Debtors velocity is 3 months, creditors velocity is 2 months. Now very simple. Can I say out of this? By the way, they have just used the words to confuse you. Debtors velocity जैसा कुछ नहीं होता. It is always receivables velocity, payables velocity. So from debtors velocity, can I say I can take out receivables turnover ratio? Payables turnover ratio I can take out. Yes sir, you can take out receivables turnover ratio, payables turnover ratio out of this. Okay, not to worry, simple सी बात है. See, this is given in months, so 12 months upon velocity, 12 months upon velocity, आंसर आ जाएगा. Next, stock turnover ratio is given as 1.5 times. Simple assumption that when nothing is mentioned, cost of goods sold in the numerator, closing inventory in the denominator. Now closing और average inventory in the denominator, बराबर, closing और average inventory in the denominator. अब देखो there is an information pertaining to opening inventory. So can I say यहाँ पर generally what do I say? It is cost of goods sold upon closing inventory. But मैंने बोला ना that if question gives you an information about the average or opening inventory, average inventory will come. तो यहाँ पर देखो closing stock of the period is 10,000 rupees above the opening stock. मतलब can I say इससे आई कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ माई एवरेज इन्वेंट्री.
यस, सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्लोजिंग आएगा, नो, इन दिस केस वी विल बी टेकिंग एवरेज इन्वेंट्री, वाई इन्फॉर्मेशन इज गिवन. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल इज गिवन. अब देखो पूछा क्या है, दे हैव गिवन यू द फिगर्स ऑफ बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल एंड हमें निकालना है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट इज. ओके, नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट इज गिवन, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इज गिवन. ओके 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 ओके. So now let us start solving this particular question. First part is very very simple and I assume आप खुद से भी कर लोगे. So what is the first part? First part में they have asked you to determine sales and cost of goods sold. Very very simple. Sales and cost of goods sold. Pretty simple. So see, can I say gross profit margin is gross profit upon sales into 100. ऐसे point, see if you, there is a method of presentation. I know that it is one stroke calculation, but I am also telling you how will you present the question in exam, how will you present a solution in exam. तो उस basis पे जा रहा हूँ, so full marks मिले. Gross profit margin is given as 25% is equals to, what is the amount of my gross profit? It is 4 lakhs upon sales into 100. So what is the amount of my sales? 4 lakh upon 25%, 16 lakhs. So this is done. Next they have asked us to calculate cost of goods sold. तो अब लिखो that can I say from sales, if I reduce my cost of, if I reduce my gross profit, I come to cost of goods sold. Yes sir. Yes. What is the amount of my sales? I just took out as 16 lakhs now. Gross profit का amount is given to me as 4 lakhs. So cost of goods sold, can I say that it is 12 lakhs? Yes sir, it is 12 lakhs. This is done. Okay, this is done. So sales and cost of goods sold is given. Next comes sundry debtors. Now here, this is what the conceptual point is. This is where the concept is. Come. So sundry debtors. Now एक technique बता रहा हूँ. Will show you a technique. Just present it like that. So see, can I say that out of my total receivables, if I reduce my bills receivable, I will come to sundry debtors. Yes sir. Pretty simple logic. हाँ जी, pretty simple logic. So अब इसमें receivables कैसे निकलेगा? For that you need to go to working note number 1. So let us prepare working note number 1, receivables. So for that what we now have is, what we now have is debtors velocity. So write down debtors velocity as 3 months. So simple, what is my debtors turnover ratio? Can I say it is 12 months divided by debtors velocity? 12 months divided by 3 months is equals to 4 times. Now moving further, जो मेरा डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, सॉरी डेटर्स टर्नओवर नहीं लिखूंगा, आई विल राइट रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. ओके, इसको आर कर देना. नाउ व्हाट इज रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो? प्रीटी सिंपल. इट इज, और देखो रिसीवेबल्स किस पे क्रिएट होते हैं? क्रेडिट सेल्स पे. सो क्रेडिट सेल्स
डिवाइडेड बाय क्लोजिंग रिसीवेबल्स, क्योंकि रिसीवेबल्स की एवरेज का देर इज नो डेटा गिवन, इन्वेंट्री का एवरेज डेटा इज गिवन. ओके, सो रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम्स. क्रेडिट सेल्स, सर अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स तो पूछा ही नहीं है. सो जनरल अकाउंटिंग अजम्पशन जो आप लगाते हो, ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स. ओके, ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स, जनरल अजम्पशन. सो माई sales was how much? My sales was 16 lakhs. So over here 16 lakhs divided by closing receivables. So finally my closing receivables comes to 4 lakhs. 16 lakh divided by 4. This is done. So now listen, here is where the concept is. My 4 lakh rupees is my closing receivables. अब इसमें से I told you that bills receivable plus sundry debtors is what you get the total receivables. Okay, now receivables turnover ratio is what I have always taught you. So receivables as per working note number 1 आया 4 lakh, out of which my bills receivable can I say is given in the question as 25,000. So the amount of sundry debtors is 3,75,000. This is the conceptual point. Great. Yes sir, it is great. Now comes the amount of sundry creditors and closing stock. अब ध्यान से सुनना. The question is designed in such a way, ये question इस तरीके से डिजाइन हुआ है ना कि until and unless I do not take out the amount of closing stock, I won't be able to get the amount of sundry creditors. बताओ ऐसा है, जब तक मैं क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ना निकालूं मुझे सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट ही नहीं मिलने वाला है. सर ऐसे कैसे डिजाइन हुआ है? द क्वेश्चन इज डिजाइन लाइक दैट. आई विल शो यू. सो फर्स्टली लेट मी टेल यू. सो फर्स्टली लेट अस फाइंड द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. ओके, ओके सर. नाउ सी another thing over here. So just have a look at it. Now they have given you a particular point that closing stock for the period is 10,000 rupees above the opening stock. Okay, तो पहले लिखो opening stock. First you write something called as opening stock. Okay sir. In your opening stock, if you add the figure of 10,000, जिसको I can say increase in stock. So can I say I will get the amount of closing stock? This is what is given in the question. Yes sir, यही दिया है सवाल में. Now how to calculate the value of opening stock? Now you prepare working note number 2. आ जाओ working note number 2 में let us go and let us find the amount of opening stock. Working note number 2, the amount of my opening stock. कैसे निकलेगा ये चीज़? Now see, now see, very simple. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. What is my inventory turnover ratio in this case? मेरा अबे sorry, what is my inventory turnover ratio in this case? Can I say in this case, इस केस में my inventory turnover ratio is cost of goods sold divided by average inventory. Divided by my average inventory. Yes. So now I will say star let opening inventory be x. सर फिर से दर्द देने वाली चीज. अरे नहीं, फोकस. So let opening inventory be x. So can I say closing inventory is x plus 10,000. Boys are going into pain once I just named the value x. बताओ, लड़के दर्द झेल रहे हैं. दर्द नहीं झेल रहे, लड़कों को अपना पास्ट याद आ जाता है x वेरिएबल यूज करते ही. बताओ, अब से ना मैं y यूज करूंगा. एनीवेज यहाँ पे लेट्स फोकस. सो नाउ ओपनिंग इन्वेंट्री आई अज्यूम टू बी x, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज x plus 10,000. सो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? Can I say it is opening inventory plus closing inventory upon 2. So x is my opening inventory plus x plus 10,000 is my closing inventory upon 2.
Cool? Yes. So I can say that this is something called as 2x plus 10,000 upon 2. Yes sir, you can say this, you can say this, you can say this. Cool. Now, very important. Okay, this is the very first step of the point, and this is the second step. Now, what is inventory turnover ratio? Can I say it is 1.5 times? Yes. Is equals to, what is the amount of my cost of goods sold? Cost of goods sold, can I say it is 12 lakh rupees upon average inventory? So, can I say average inventory is how much? 12 lakh divided by 1.5, it is 8 lakh rupees. Oh, so now as per step 1 I have average inventory as this, as per step 2 I have average inventory as this. So can I say that if I in step 3 if I combine step 1 and step 2, मुझे एक इक्वेशन मिलता है, एवरेज इन्वेंट्री का वैल्यू इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, दिस वैल्यू इज एज पर स्टेप 1, दिस वैल्यू इज एज पर स्टेप 2. आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझा होगा. स्टेप वाइज मार्किंग ICI गिव्स यू, इसलिए ऐसे कर रहा हूँ. सो नाउ जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन. 8 lakhs इंटू 2 इज 16 lakhs is equals to 2x plus 10,000. Can I say x का value is going to be 16 lakh minus 10,000, 15 lakh 90,000 divided by 2. अब x क्या था? I had assumed x as my opening inventory. Cool. So x is equals to opening inventory कितना आया? Is equals to 7,95,000. This is the amount of my opening inventory. Okay, and this is the value which I will be writing in my main solution. So working note number 2 के हिसाब से this is 7,95,000, and if I increase the inventory by 10,000 जो क्वेश्चन ने दिया हुआ है, my closing inventory comes to 8,05,000. I hope यहाँ तक the question is very very clear. यहाँ तक the question is very very clear. आराम से जा रहा हूँ. ओके, सो नाउ क्लोजिंग स्टॉक इज डन. नाउ फाइनली टाइम टू सॉल्व द फिगर ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स. बारी आती है मेन सोल्यूशन की. सो कैन आई से आउट ऑफ माई पेबल्स, इफ आई reduce the amount of bills payable, मैं किस में आ जाऊंगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स पे आई विल कम. डन. इफ आई लुक एट द फिगर फॉर बिल्स पेबल, मेरे को 10,000 का दिया हुआ है, बट what about the total payables? Sir, working note number 3. This is exactly the presentation that ICI expects you in the exam. ICI इसी टाइप का कुछ presentation आपसे expect करती है, आपको ऐसे ही present करना है एग्जाम में. Cool? Yes sir, cool. So let us go to working note number 3, which is regarding my payables का figure. नाउ पेबल्स कैसे निकलेगा? ध्यान से सी, देर इज सम, यू हैव बीन गिवन क्रेडिटर्स वेलोसिटी, सो राइट डाउन क्रेडिटर्स वेलोसिटी is how much? Creditors velocity is given to you as 2 months. So what is my payables turnover ratio? मैंने बोला था ना कि वेलोसिटी दिया होगा, टर्नओवर निकालना है. हाँ जी, दिस हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द कॉन्सेप्ट. सिंपल, सिंस दिस इज गिवन इन मंथ्स, 12 months अपॉन 2 months, तो ये आ जाएगा 6 गुना, 6 times. बहुत ही बढ़िया. ओके, दिस पर्टिकुलर जॉब इज डन. नाउ पेबल्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है? कैन आई से
ओके, दिस इज स्टेप नंबर 1. ओके, दिस इज स्टेप नंबर 1. अब अगली चीज, पेबल्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है? कहने से ये तो भाई साहब मेरे परचेसेस पे डिपेंडेंट है. व्हाट अबाउट माय परचेसेस? सो नाउ देयर आर टू मेथड्स. ओके, देयर आर टू मेथड्स टू डिटरमाइन. इधर आओ, इसके दो अल्टरनेटिव्स है. यू कैन प्रेफर विच एवर यू लाइक. इन ऑल्टरनेटिव और मेथड 1 you can use COGS formula. आप COGS का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. What is COGS? It is, can I say, opening inventory plus purchases minus closing inventory. COGS is given to me as 12 lakhs is equals to opening inventory. We already took it out as 7,95,000 in the second part of the solution, plus purchases minus closing inventory as 8,05,000. तो अब what are my purchases or credit purchases? I would say 12 lakh minus 795 plus 805. This comes to 12 lakh 10,000. This is method 1. Okay. बट मेथड नंबर 2, जिसको और ज़्यादा लॉजिकल जाना है, द पर्सन हु वांट्स टू गो इवन मोर लॉजिकल, देयर इज अ मेथड नंबर 2 ऑल्सो. सर और कौन सा मेथड है? यू कैन प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो. सर क्या बात कर रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट से निकलेगा? अरे बिल्कुल निकलेगा. सो फॉर वन मोमेंट, सिंस क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्लियरली मैं बनाता हूँ. बट जस्ट गिव मी 1 मिनट. देखो, इट्स अ सिंपल थिंग दैट इन ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास देर इज, कैन आई से, नो पर्टिकुलर दिस थिंग, क्या बोलते हैं उसको, इन अ ट्रेडिंग अकाउंट अज्यूम करो दैट देर आर नो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बिकॉज क्वेश्चन डज नॉट मेंशन एनीथिंग. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? कैन आई से ओपनिंग स्टॉक विल कम, परचेजेस विल कम, ग्रॉस प्रॉफिट विल कम, और क्रेडिट साइड्स में सेल्स विल कम, क्लोजिंग स्टॉक विल कम. यस सर, दिस इज हाउ अ ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. सो ओपनिंग स्टॉक हम लोग को मिला है 7,95,000, सेल्स हमें मिली है 16 lakhs, क्लोजिंग स्टॉक इज 8,05,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन टू एस 4 lakhs. बराबर. परचेजेस आप बैलेंसिंग फिगर डायरेक्टली निकाल सकते हो. 2 मिनट के लिए इफ यू इग्नोर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड राइट ऑल दी अदर आइटम्स जो एक नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में आपको मिलती है, इसका बैलेंसिंग फिगर यू विल गेट. सो कैन आई से this is 24,05,000 on the credit side, this is 24,05,000 on the debit side. इसमें से 4 you do 12,10,000 बैलेंसिंग फिगर. ठीक है सर, एग्जाम में कौन सा मेथड करें? लेट मी टेल यू दैट इन एग्जाम ICAI यूज दिस मेथड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेथड. बट अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर दिस ट्रिक, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हैं. दिस इज मोर सिंपल एंड बेसिक. तो परचेजेस मुझे कितनी मिल गई? सो सी, पेबल्स टर्नओवर रेशियो ओवर ईयर, एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूं. सो पेबल्स टर्नओवर रेशियो, by the way, this was step number 2. This was step number 2 is equals to, can I say, credit purchases divided by what? Divided by my closing payables. क्योंकि पेबल्स का भी एवरेज करके कुछ डेटा दिया नहीं है. सो दिस इज 6 is equals to 12,10,000 divided by closing payables. सो यहीं पे लिख देता हूँ, माई क्लोजिंग पेबल्स इज हाउ मच? 12,10,000 डिवाइडेड बाई 6, 2,01,667. आंसर ऐसा ही आ रहा है, नॉट टू वरी, ये आंसर सही है. एक तो पॉइंट में आंसर आता है, हम हिल जाते हैं एग्जाम में. व्हेन आंसर कम्स इन पॉइंट, वी आर शेकन इन द एग्जाम. 2,01,667. वर्किंग नोट नंबर 3 इज डन. सो नाउ एज पर वर्किंग नोट नंबर 3, this is 2,01,667 minus 10,000. I do, मुझे आता कितना है? 1,91,667. This is the amount of my payables. Sorry, this is the amount of my sundry creditors. Okay.
तो कॉन्सेप्ट भी हो गया, बेसिस भी हो गया, एवरीथिंग इज बीन कवर्ड, टेंशन नहीं लेने का भाई. ओके, नाउ द फाइनल पार्ट, वेरी वेरी इजी, फिक्स्ड एसेट्स. एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू आर सपोज टू प्रेजेंट इन एग्जाम ओनली. ऐसे ही प्रेजेंट करना है एग्जाम में. सो नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जरा देख लेते हैं. सो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज बीन गिवन टू यू एज 4. अब यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो. पूरा लिखना है एग्जाम में, यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ. दिस इज गिवन एज 4 टाइम्स. एंड सी, मैंने बोला था ना, वेदर इट इज टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो और इट इज फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो. हेलो, वेदर इट इज टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो और फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, न्यूमरेटर में ऑलवेज सेल्स विल कम. न्यूमरेटर में ऑलवेज सेल्स विल कम. इट इज 16 lakhs. एंड एक और चीज, व्हाट डिड आई टेल यू, आई ऑल्सो टोल्ड यू वन थिंग, दैट एग्जाम में दे विल मेंशन कि वेदर दिस इज टू बी टेकन ऑन सेल्स, दिस इज टू बी टेकन ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. बट अगर कुछ भी नहीं बोला है तो यू कैन अज्यूम एनीथिंग, बट वी विल गिव प्रायोरिटी टू सेल्स. ओके, अब इन मॉड्यूल, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को प्रायोरिटी दिया है. तो मॉड्यूल में इस पर्टिकुलर पार्ट का जो आंसर इनको आ रहा है वर्सेस जो अपने को आएगा, इट विल बी डिफरेंट. इन मॉड्यूल फॉर दिस पार्ट आर आंसर विल डिफर. व्हाई? बिकॉज एज पर आर प्रायोरिटी वी आर टेकिंग सेल्स, एज पर मॉड्यूल दे हैव टेकन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. सो व्हाट शुड बी फॉलो सर? Follow sales only, because in module they have also given a note in the end. I'll make you read, first you solve this. So what is my amount of my fixed assets? So fixed asset turnover ratio ko we will put it A, sales ko we will put it B. So can I say that B divided by A will give my closing fixed assets? So this is going to be 4 lakhs. Now come to the solution. Now the question is completed. Question ho chuka hai. Question is done. Now quickly come to the solution. Wait a minute. हाँ, quickly come to the solution over here. ये देखो, over here मैंने बोला था ना that in module, अरे किधर गया? See, over here they have calculated as cost of goods sold. But not to worry. Why? See, stock turnover ratio and fixed asset turnover ratio may be calculated either on sales or on cost of goods sold. Stock turnover ratio maro goli, because even in examination they always give priority to cost of goods sold only. Okay, and in fixed asset turnover ratio when asked in exam they give priority to sales. तो मॉड्यूल में सॉल्व करने के लिए दे हैव टेकन सम अदर ऑल्टरनेटिव, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जाम इफ दे विल नॉट मेंशन एनीथिंग, यही प्रायोरिटीज लेना विच आई एम टेलिंग यू. Okay, and see another assumption, all sales are credit sales, all purchases are credit purchases. तो इनका जो fixed asset का figure आ रहा है, it is coming to 3 lakh while our answer is coming on 4 lakhs. Why? Same difference, because of the same reason. बाकी see, opening inventory comes, closing inventory comes to 8 lakh 5,000. See, sundry creditors 191,667, this is matching. Sundry debtors 375, which is matching. 12 lakhs and 16 lakhs. The entire solution is matching. बहुत ही बढ़िया. Okay, now what sir? Now time for another question. अब समय है एक और सवाल का. Okay, and after that we will be winding up almost. We will almost be winding up. Okay. अच्छा, इसके अलावा we have to solve May 25 PYQ also. But trust me, जो May 25 का PYQ है, which they have asked, it is a combination of ratio analysis plus working capital एस्टिमेशन. तो कैसा है ना, जो PYQ है इसमें कुछ चीज़ें रेशियो एनालिसिस की है, बट अनटिल एंड अनलेस मैं आपको वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन नहीं पढ़ाऊंगा ना, अनटिल एंड अनलेस आई विल नॉट टीच यू वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, दैट क्वेश्चन विल लुक समथिंग डिफरेंट टू यू. ठीक है, सो लाइक वी डिड दिस चैप्टर, जस्ट सम बेसिक्स. I will do this question, but not now. I will do it at a later stage. Once we come to working capital management, I will do that question. Okay, but it is a very good question where 2 chapters ka application is involved. Okay, so out of 4, right now I am doing only 3. Because uske liye I will need you to develop the conceptual base for working capital also, which will be done in next lecture. So now one last question is left, then we'll take a leave.
दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सर नॉट दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नहीं. अरे चिल चिल, कुछ नहीं है. वर्क्स कॉस्ट, यू नो ना वर्क्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट. यस, जस्ट अ मिनट, आई ड्रिंक वाटर. एक्सक्यूज मी. Okay, cool. Chalo then. Let us do this particular question. मेरे साथ शांति से करो. Just do this question politely and patiently with me. You will get this. Okay. Final question of the day. Let us begin. This is practice question number 3 of our ICAI module. The following accounting information and financial ratios of PQR Limited relates to the year ended 31st of March 2023. GP is given, NP is given, raw material consumed 20% of works cost, direct wages works cost ka 10%. Don't worry, like I said, as per concept, that if nothing is told about works cost, assume it to be cost of goods sold. Stock of raw materials 3 months usage. Stock of finished goods 6 months ka works cost. This is a point which they have given it in working capital terms. Okay, we call it raw material holding period. ये मैं करवाऊंगा जब working capital आएगा. At that point I will be making you solve the ratios in this format as well. Okay, but this is raw material holding period. Nothing new. आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, just divide it by 12 months. You will get your raw material inventory turnover ratio. Wow. Stock of finished goods, debt collection period is 60 days. Next, fixed assets to sales is given, fixed assets to current assets, current ratio, long term loan to current liability, share capital, and fixed asset is given as 26 lakhs. We have to prepare a summarized profit and loss account as well as a balance sheet. आ जाओ, final question of the day. Okay, last question. So trading and P&L दोनों ही बनेगा. Prepare it with me. It is not a big question. And now prepare balance sheet. Cool, sir. Done. Now, starting point what? फिक्स्ड एसेट उन्होंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. दे हैव ऑलरेडी गिवन यू द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2022 विच इज वर्थ 26 lakhs. सो ये तो लिख ही लोगे, जस्ट राइट इट ओवर हियर. फिक्स्ड एसेट्स is worth 26 lakhs. Okay. Next, if you have a look at it now, they have given you something called as fixed assets to sales. Now what is this? Can I say this is my fixed assets turnover ratio? And when nothing is given, देखो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, so what will be our first priority in the numerator? Sales. Wow, देखो यहाँ पे देते नहीं है तो first priority take it at sales. So working note number 1, sales. Fixed asset turnover ratio is equals to sales divided by, यहाँ पे आएगा closing fixed assets. Okay, first priority closing fixed assets. Fixed assets turnover ratio is given as 1:3. मतलब it is nothing but 3 times. Okay, it is nothing but 3 times. So 3 is equals to sales divided by, what is the amount of closing fixed assets? 26 lakhs. Because closing fixed assets का whatever closing balance is there, that will only go in the balance sheet. Cool. So the amount of my sales is 26 into 3. 78 lakhs, na? Yeah, 78 lakhs. Now. Just credit it on your trading account. So buy sales working note number 1 of 78 lakhs. Okay, शांति से आराम से we will go. Next,
Gross profit directly 15% on sales. Net profit directly 8% on sales. So यहाँ पे I will directly write to gross profit. It is 15% on sales. Okay. Now the same gross profit, यहाँ पे जो gross profit carried down था, यहाँ पर वो brought down हो जाएगा. So by GP brought down. And यहाँ पर to net profit, which is 8% of sales. Okay, just simply calculate it. So 78 lakhs into 15%, this comes to 11 lakh 70,000. And 78 lakhs into 8% is 6 lakh 24,000. Okay, this is done. This is taken, this is taken. Now, raw material consumed is 20% of works cost. Now see, very, very important. This is a logic which is based on working capital. अब इसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं. There are working capital logics over here also. Now when I will teach you raw material का formula ना, in working capital, there is something called as raw material consumed. Just a minute. Just write this raw material stock. Now there is something called as raw material consumed. You know what is raw material consumed? It is opening raw material plus raw material purchased minus closing raw material. There are some particular concepts like this in working capital also, and of course you might have studied this in cost sheet as well, so nothing to worry about it. Okay, ये पता है आपको. So raw material consumed क्या बोलता है? It is 20% of works cost. So what is my cost of goods sold now? See, firstly, just a minute. Okay, great. Now see, can I say that sales is how much? Sir, your sales was 78 lakhs. Just note this down. Out of which, what was my gross profit? It was 11 lakh 70,000, जो directly 15% है आपके पास. So what is my cost of goods sold? Calculate it. 78 lakhs minus 1170. This is 66 lakh 30,000. Okay. And COGS. Now what is raw material consumed? They have said that it is 20% of works cost. मतलब can I say cost of goods sold पे directly 20%? Yes, nothing wrong. So raw material consumed is equals to 66 lakh 30,000 का 20%, that is 1326. Okay, this is done. 13 lakh 26,000 comes over here is equals to opening material plus material consumed minus closing material, right? Yes sir. See, okay, this is a formula, but no, ये वाला mostly we will not use in this question. We'll use in the next one, जो मैं आपको बाद में करवाऊंगा. What to use? See, stock of raw materials is on 3 months usage. Now you know, this is the concept which is used. Raw material requirement is raw material consumed multiplied by raw material holding period divided by 360 days, 12 months, 3 or 1 year or 52 weeks. So upon 12 months. Okay, just do it like this. Raw material ka requirement is like this. Okay, now why is it coming like this? Don't worry. Kal jo class hogi, the class which will be held tomorrow, I will be explaining this logics in detail. Revising in the, I will be making you revise these logics in detail, not to worry. Jab bhi next class hogi. So can I say it is 13,26,000 into, this is my raw material holding period of 3 months upon 12 months. अभी के लिए कर लो इसको. So 3,31,500. You know what is this? This is my closing raw material. This is my closing raw material.
सो क्लोजिंग रॉ मटेरियल कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट में. सो क्लोजिंग रॉ मटेरियल, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2, 331,500. This is done. Yes sir, this is also done. Next comes direct wages, 10% of works cost. Can I say ये directly यहीं पे जाएगा to direct wages. This is 10% of my works cost. इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं. We will need a bigger trading account. Really sorry guys, but we will need a bigger trading account. What is direct wages? Can I say it is as per my 10% of my works cost? My works cost is 66 lakh 30. Multiplied by 10%. This is 6 lakh 63,000. Okay sir, direct wages is also done. Stock of raw material भी दे लिया. Next is stock of finished goods. Now see, always remember this law. ये law हमेशा ध्यान रखना. Raw, this I will be repeating in working capital also. सुनिए लो लॉजिक. FM के जो formulas है ना, the formulas for working capital which are being made in FM, they are based on a different logic and they are not based on the cost sheet वाला logic. Okay, so don't mix them up. See, as per FM का logic, raw materials are valued at raw material consumed. तभी जो closing raw material मैंने निकाला, I took it out on raw material consumed. वैसे ही finished goods are valued on cost of goods sold. Okay, so like I told you, the inventory turnover ratio is cost of goods sold upon closing inventory. At that moment, we were always assuming कि जो inventory हमारे पास है, it is on cost of goods, it is on our finished goods का inventory. Okay, not to worry. When I will come to working capital, in depth I will be explaining this. But as of now, remember this logic. So stock of finished goods is cost of goods sold. It is valued at cost of goods sold. So working note number 3. Okay, there is not a working note required over here. Working note की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. Closing finished goods. Can I say this will be 66 lakhs 30,000 multiplied by the amount of works multiplied by 6%, 3 lakh 97,800. This is done. Next is debt collection period. This is nothing but my debtors velocity. देखो ना, days में दिया हुआ है. Secondly, they have not given an assumption that we can use 360 days, and that is the same thing which they did in solution. They haven't considered that assumption and they divided it by 365 days. So we are also going to do the same. Question का line पढ़ने का, बिना line पढ़े 360 days का assumption नहीं लेने का. Okay, so debtors or receivables, working note number 3. See, what is my receivables turnover ratio? Can I say it will be 365 days divided by my debtors velocity? Yes sir. So 365 days divided by 60 days. Cool. This is coming to 6.0833333333. Okay, just take it like this. Next, can I say receivables turnover ratio is equals to what? It is based on my credit sales. Yes sir, it is based on my credit sales. Divided by, is there any data given regarding opening receivables? No sir. So closing receivables will be considered. Hanji sir. So 6.083333. General accounting assumption, all sales will be taken as credit sales. So 78 lakh rupees divided by closing receivables. So closing receivables is how much, which will go in my balance sheet. Calci पे लो 78 lakhs, but divided it by total
divide it and take digits recurring till the end. 78 lakhs divided by 6.08333333. Take the digits till the end. You will get something called as 12 lakhs 82,192. 191.7 aa, it is 192. Sir, is this answer correct? Yes, it is. Don't worry. So receivables comes to how much? 12 lakhs 82,192. So this was your fixed assets, this was your closing raw material, closing finished goods and receivables. Just making it in a pointer format so you don't get confused. Cool. These are my direct wages, gross profit, sales is given and net profit is given. Debt collection period is done. Now see, accounting information, matlab whatever information is related to my profit and loss account and trading account, I have utilized it to the totality. Now these all ratios will give me balance sheet items. Okay, so now let us balance the accounts. So if you go and balance the accounts over here, कुछ difference आएगा. Okay, अच्छा, also one thing, do not forget to write cost of goods sold का figure. Since what is the amount of cost of goods sold? Where have we calculated it? We have calculated it in working note number 2, which is 66,30,000. Don't forget this. Okay. Now see, very very important. Can I say the figure? What is the figure of cost of goods sold? क्या होता है cost of goods sold का? What is the figure of what is the formula of my cost of goods sold? Can I say it is my opening inventory plus whatever I purchase minus closing inventory at cost? So can I say कि ये जो मेरा cost of goods sold है, इसमें opening inventory is also there, purchases वाला figure is also adjusted, closing inventory वाला figure is also adjusted. So ये तीनों का net effect is what I have already passed in P&L account, oh sorry, trading account. So इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है. Apart from that, sales is there, GP is there, any direct expenses? Yes, direct wages is there. Now you try to balance this account. 78 lakhs minus 6 lakh 63 minus 11 lakh 70 minus 66 lakh 30. You will get a difference of 663. एक minute. Why am I getting a difference of 663? Just a minute. Materials. Oh, sorry. I am not supposed to write cost of goods sold over here. Sorry, I am supposed to write raw material consumed over here. Sorry, हाँ मैं वही सोचूं, कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, मतलब मेरे को ऐसे भनक लग रही थी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. Really sorry. Anyways, तो अब देखो, opening raw material is done, raw material purchased is done, closing raw material is done. बाकी direct expenses are over here, gross profit is over here, sales is over here. So everything now is balanced in the P&L, right? So what is the working note in which I have taken out the figure of raw material consumed? Over here, working note number 2. So this is 13,26,000. This is done. So finally over here I will be getting something. Okay, so 78 lakhs minus 1326 minus 1170 minus 663. कुछ तो गड़बड़ है दया. Something is very very fishy. What is it? There will be another account over here. I am getting a difference of 46,41,000. What has ICI done? They have taken this as production overheads. Because see na, this, okay, now just write this. ये working note number 3 निकालो. 3 ही निकाला है ना मैंने. Okay, make this working note number 4. Very important. Question is almost done, huh, guys? See, how did I take out my production overheads का figure? Now can I say gross works cost? मैंने उसको cost of goods sold तो बनाया था, but now let us go as per the terminology. इसमें can I say raw material consumed आ जाता है,
I have direct wages over here, and I also have something called as direct expenses or production overheads. Can I say इन्हीं तीनों का total gives me my gross works cost or cost of goods sold, जो मैंने माना था यहाँ पे 66,30,000 is the total, out of which 13,26,000 is my raw material consumed and 336 is my direct wages. So there is something called as factory overheads or direct expenses. वो कितना है? 4968. Did I miss out something? Okay, yeah. It's okay. Don't write this. Don't write this. ये मत लिखो. Unnecessary. You will get confused. Not to write this. मुझे लगा मुझे इससे आंसर आ जाएगा, बट जस्ट बैलेंस इट एंड राइट 46 41 ओवर ईयर. क्वेश्चन में है थोड़ा एम्बिग्विटी. ओके, नाउ फॉरगेट अबाउट इट. नाउ ओवर ईयर द सेम ग्रॉस प्रॉफिट विल बी कैरिड डाउन एंड दिस ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 11,70,000. सो यहाँ पर नाउ व्हाट ICI हैज डन, इसका बैलेंसिंग फिगर दे हैव टेकन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. So 11,70,000 minus the figure of my net profit 624 comes to 546. ये 546 ICI ने इसको consider किया as selling and distribution overheads, and this is balance at 1170. ये हटा दो, this is just a balancing figure. Okay, वैसे भी balancing figure है. If you do all the other things you are going to get the answer. Done. इसी के अलावा when I come to balance sheet, now let us come to balance sheet. So fixed assets to sales. Now fixed assets to current assets is 13:11. So fixed assets to current assets is 13:11. अच्छा, by the way, another thing, they have not mentioned the figure of cash over here. Cash का figure इन्होंने mention नहीं किया है, so not to worry. And now you know what, I am going to take this out as per working note number 4. मुझे मिल जाएगा cash का figure. Now how will I get the cash balance? Guys, 5 to 10 minutes more. I know time's up, but 5 to 10 minutes more and I'll be done. अब ज़्यादा बचा नहीं है, trust me. So see, can I say my fixed assets plus my current assets gives me my total assets? Now let's say total assets is 100%, and what they have told that fixed assets to current assets is 13:11. Okay. And fixed assets का value what they have given is 26 lakhs. So 13 plus 11 is 26. So yeah, so this is 13 on 26. No, not 13 plus 11 is 24. So 13 on 24 is this, and 11 on 24 is this. So 26 lakhs into 24 upon 11. Just a minute. Yeah, 24. So 26 lakhs into 11 up. Just a minute. I'll just do it like this. Fixed assets upon current assets is 13:11. Fixed asset is given to me. So current assets is what? It is fixed assets multiplied by 11 upon 13. Yes. So 26 lakh into 11 upon 13 gives me 22 lakhs, and the total of my asset side comes to 44 lakhs. बहुत बढ़िया. And fixed assets का okay, कैसे आया ये? Very simple. Fixed assets multiplied by 11 upon 13. Okay, this is done. Now see, out of current assets of 22 lakhs, मेरे पास क्या क्या है करंट एसेट्स में. सो कैन आई से आउट ऑफ करंट एसेट्स मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है 331,500. आई हैव क्लोजिंग फिनिश गुड्स 397,800.
and I have receivables of 12,82,192. So other current assets which are already found is 20 lakhs 11,492. So can you tell me the figure of cash जो balancing figure आएगा? This comes to 1,88,508. Okay, so this is as per working note number 4. And also as per working note number 4, we got the figure of the total assets. Total asset का figure अपने को मिल गया था. Now let us come to the total liabilities. अब देखो current ratio is given, so इससे I will get my current liabilities. Current liabilities कैसा है? See, current ratio is current asset upon current liabilities. So can I say that current assets, what is the value of my total current assets? It is 22 lakhs divided by current ratio. अब तो यार इसके लिए वर्किंग नोट भी नहीं बनाऊंगा, टाइम भी कम है इसीलिए. So current ratio is 2:1. I can say that this is 2 times. So current liabilities comes to 11 lakhs. वही current assets upon current liabilities if you do, you will come to your answer. Next, long term loans to current liabilities. So can I say now I will get my long term debt? Now I will get my long term debt. What is the figure of long term debt? Very simple. See, can I say that my long term loans are 2 times my current liabilities? Yes sir. So current liabilities are how much? 11 lakhs into 2. So this comes to 22 lakhs. Next is share capital and reserves and surplus. Now over here, one final working note, उसके बाद no working notes. Okay, and I also know that this is 44 lakhs का figure. आ जाओ, one last working note. Now can I say that out of my total liability side, जो मेरा liability side का total है, it is 44 lakhs. उसमें से other liabilities which I already found out, जिसमें क्या था? There was current liability, there was long term debt. So current liability was 11 lakh and long term debt was 22 lakhs. So can I say 33 lakhs का value I have already found it out. So एक minute, there is something wrong which I did over here. Just a minute. I think मैंने add गलत किया है. I guess, yes, I guess I have added it wrong. This should sum up to हाँ, this should sum up to 48 lakhs. मैं वही सोच रहा हूँ, ऐसा कैसे हो रहा है? Okay, so out of 48 lakhs, 33 lakhs का liabilities is what I have already found. Okay, yes sir. ये भी अटक गया भाई, 5 मिनट, जा रहा हूँ, chill. Okay, हाँ, so 48 minus 33 if I do, I will come to how much? 15 lakhs. Now इसके there are 2 parts. One part, by the way, this is my proprietary fund, or not proprietary fund, this is my shareholders equity. Okay, so इसमें आता है equity share capital or whatever you call it, and reserves and surplus. शेयर होल्डर्स इक्विटी बुलाओ, प्रोप्राइटरी फंड अगर इसमें बुलाओगे तो इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी जुड़ जाएगा, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट. ओके, सो आउट ऑफ 15 lakhs, मेरा जो शेयर कैपिटल का पार्ट है दैट इज 1/5,
and this is 4/5. बहुत बढ़िया. Okay, so how much is it? 15 lakhs into 1 by 5 is 3 lakhs, and balancing figure this is 12 lakhs. Okay boss, this is done. 10 मिनट एक्स्ट्रा आपसे मांगे थे, आपका काम मैंने कर दिया है. $3 lakhs done, 12 lakhs done. Okay, a pretty sorted question until and unless you do not know the logics of working capital, which I will be covering in the next lecture. इसी के अलावा 2 assumptions है, ये याद रखना है, ये याद रखना है. ओके, डोंट ट्राई टू फाइंड दीज assumptions by any way. ये बैलेंसिंग फिगर ही निकलता है इस क्वेश्चन में. सी ना, वी ट्राइड थ्रू अनदर वे बट इट डिडंट केम आउट, तो इसको assumption बेसिस पे ही रखेंगे अपन. Okay, this is done. This question is also solved. And with this, we are done with ratio analysis in just one lecture. एक सम बाकी है अगले लेक्चर में. Now, when is the next lecture? Let me just check the schedule. कब है अपना next lecture so that we can. Mostly कल ही है. I guess it is tomorrow only. Yes, 12th of August 2025. Tomorrow is working capital management. जहाँ पर वो कैपिटल एस्टिमेशन वाले जो आपके फॉर्मूलेज दिमाग में नहीं जाते ना, द फॉर्मूलाज फॉर वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन विच डू नॉट गो इन टू योर माइंड, वी विल कवर देम. नॉट टू वरी टुमारो. एंड you can also consider that those logics are continuation to this question which I did right now and May 25 का question PYQ एक continuation बनेगा, not to worry. Okay, चलो so that's it. Thank you so much for joining us on the live tonight. हालांकि कोई भी नहीं देख रहा है फिलहाल. Most of you are watching recorded, so not to worry. Thank you so much guys. I'll see you in the next session. Till then, bye bye, take care and keep studying.